Hello everyone, I hope you all are doing great. In today's video, I'll come up with the new concept that is disintegration. This video is presented and created by our channel. Let's discuss the topic what is disintegration. Disintegration basically a term which we know that it's a breakage of compound into some smaller components, right? So in pharmaceutical industry, it's relatable term, but it shows that it is used to show how quickly the tablet breaks into a smaller particles. To give you a clear picture, whether we are confuse ourselves within two terms, that is disintegration and dissolution. Disintegration is basically a breakage of a tablet into a granules, right? And further, when it further disintegrates, it becomes a dissolution, that is dissolve of a drug into a particular time, right? तो ये दोनों सिमिलर से कॉन्सेप्ट्स हैं, बट डिसइंटीग्रेशन को माइंड में हमेशा रखना कि अभी वो सिंपल स्मॉलर फ्रेगरेंट में वो पर्टिकुलर ड्रग क्या हुआ है, ब्रेक डाउन हुआ है. डिसॉल्व का मतलब वो कंप्लीटली डिसॉल्व कर गया, दैट बिकम्स अ डिसोल्यूशन. वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा है. डिसइंटीग्रेशन अभी वो ग्रेन्यूल्स में ब्रेक हुआ है. So why we need to study this to assess whether the dosage form meet the particular requirement of the respective pharmacopoeia. That is कभी जब हम कभी भी ड्रग कंज्यूम करते हैं तो वो इंटेस्टाइन के अंदर पहले डिसइंटीग्रेट होता है, फिर उसके बाद वो ड्रग अपनी एक्टिविटी शो करना शुरू करता है. कि ये कोई बिहेवियरल स्टडी नहीं कर रहा किसी भी ड्रग की, बट जस्ट एज कि वो इंटेस्टाइन के अंदर पर्टिकुलर टेम्परेचर कंडीशन के अंदर कैसे फ्रेगमेंटाइज होएगा, तो वो उस चीज़ को स्टडी करते हैं. इट इज़ ऑल्सो इन विट्रो स्टडी कि हम ड्रग को बाहर स्टडी करते हैं रादर देन इन बॉडी. दैट इज नॉट, इट्स बिकम इन विवो, इट्स अ इन विट्रो स्टडी, राइट? तो उसके बाद ये हाउ इट लुक्स लाइक कि जो आप डिसइंटीग्रेशन इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हो तो वहाँ पर हम 6 टैबलेट्स प्लेस करते हैं. तो वो टेस्ट ट्यूब्स के अंदर हमने 6 टैबलेट्स प्लेस करी और कुछ टाइम बाद हमने क्या देखा कि दोज टैबलेट्स विल बी डिसइंटीग्रेट. ये कैप्सूल्स हैं, तो दीज विल डिसइंटीग्रेट. तो हाउ इट वर्क्स, तो मैंने इसमें सारी थ्योरी कवर अप करी है सो दैट के डिस्क्रिप्शन में मुझे नोट्स मेंशन ना करने पड़े. So I'll mention each and every part which is important in order to describe how USP 701 is working towards disintegration. तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमारे पास 6 क्लास ट्यूब्स हैं एज इट शोज इन द प्रीवियस पिक्चर. जो ईच ट्यूब इज 3 इंच लॉन्ग, तो वो उसकी जो साइज एंड डिमेंशंस हम यूज करेंगे. These are open at the top and 10 mesh screens are provided at the bottom end where you are going to place your tablet or capsule. To test for the disintegration time, one tablet is placed in each tube. Basket rack is portioned to 1 liter of beaker of full of water, and the temperature you have been provided is related to the body temperature, that is 37 degrees plus minus 2. And each tablet will be tried to be 2.5 centimeter above the surface of the below the surface of the liquid, so that it's properly immersed into the liquid, so that we get proper disintegration time of each tablet. However, some tablets have a floating, so some tablets get to float over the surface. So you are going to use the perforated plastic disc so that they remain in the solution. This will you have to be provided 28 to 32 cycles per minute or an average frequency of the instrument. So now you have to learn the criterias of each tablets or disintegration time, or what kind of criteria we are using that when we analyze these capsules. If plain or uncoated tablets you are using, these tablets are disintegrate within the passage of 5 minutes. So if you tested 6 tablets and all the 6 tablets are disintegrated, then this test is qualified to the second stage, and then in that second stage you are taking 18 tablets, and out of 18 tablets 16 tablets have to be met to the criteria in order to pass the disintegration test. Next is the for the delayed release.
uh, delayed release tablets. Some tablets are have some kind of acid resistant coatings or some enteric coatings which takes time to disintegrate. So in order to deal with such kind of drug, we are using two stages, that is acid stage and the buffer stage. Acid stage, where the specific procedures they have been mentioned, that emergent fluid will be 0.1 molar hydrochloric acid, and or they are particularly specified according to each drug in the monograph. The temperature should be 37 to plus minus 2 degrees Celsius range, and it take almost 1 hour. If after 1 hour no disintegration you have been showing over the monograph, then you have to move to the buffered stage. For the buffer stage, your pH should be 6.8 phosphate buffer, and the temperature condition will be same, and but this time you have to proceed with the help of the previous stage, that is uncoated tablet, right? तो उसके लिए जो हमने 5 मिनट का क्राइटेरिया है वो फिर वैसे ही सॉर्टेड आउट हो जाएगा. उसके बाद है नेक्स्ट द फर्विसेंट टैबलेट्स फॉर द ओरल सोल्यूशन. द इसके लिए प्रोसीजर क्या है, आप हर एक टैबलेट 6 बीकर में प्लेस करोगे. इट हैज़ कंटेन सम अमाउंट ऑफ 200 ml ऑफ 250 ml ऑफ वाटर. तो उसके बाद अगर 5 मिनट्स के अंदर आपका टैबलेट डिसइंटीग्रेट कर गया, ओरल सोल्यूशन डिसइंटीग्रेट कर गया, दैट विल द ideal time, or it will pass a disintegration test. However, if the evolution of that gas is not seized within that after 5 minutes, then it will fail that test. उसके बाद है नेक्स्ट इज अफर्वेसेंट ग्रेनुअल्स. तो इसमें भी फिर से आप वैसे डोज को प्लेस करोगे अपने 60 बीकर्स के अंदर, और वॉल्यूम वैसे ही 250 to 400 ml के बीच रखोगे. और आफ्टर 5 मिनट्स आप क्या देखोगे कि ग्रेनुअल्स में जो अफर्वेसेंस है, एवोल्यूशन ऑफ गैस है, वो सीज कर गई है. इफ इट सीज, then it says pass the disintegration test. Otherwise we have to dispatch or dispatch for the that slot get filled. This is all about the disintegration. However, I feel that this concept is a little bit easier than the dissolution we have discussed in a previous video. I hope this will help you to understand disintegration and disintegration apparatus and instrument better sense. Thanks for watching, guys. Keep learning, and Har Har Mahadev.